Assalamu alaikum everyone. I welcome you all to this session of Legally Updated, where we bring an impartial analysis of the various legal and constitutional updates. Today we will be discussing the various facets of the presidential reference on Article 63A with Barrister Azmat, an advocate of the Supreme Court. Thank you so much, sir, for your time. Without further ado, we'll be starting with the first question. Sir, we know that a presidential reference is filed under Article 186 of the Constitution, where the President of Pakistan can seek the opinion of the Supreme Court on any question of law which is of public importance. So, sir, just to start the conversation, what exactly is a presidential reference and how is it different from other appeals and other cases being heard before the Supreme Court? Well, that's a good question. Supreme Court has different sorts of jurisdictions. One jurisdiction of the Supreme Court is an appellate jurisdiction in which cases from the high courts are appealed by the parties to the Supreme Court. One jurisdiction of the Supreme Court is called an original jurisdiction in which under Article 184(3), any individual citizen of Pakistan can approach the Supreme Court only if it's a matter of public importance. One kind of a jurisdiction that the Supreme Court has is called an advisory jurisdiction. So this advisory jurisdiction that is only limited under Article 186 of the Constitution, which is only with the President of Pakistan, he can seek advice from the Supreme Court. So an individual cannot just approach the Supreme Court and say, I need an advice or an interpretation on a provision of the law. That is a very limited jurisdiction which is enjoyed only by the President of Pakistan. Like in this case, the President has filed a petition through the Attorney General directly before the Honorable Supreme Court seeking interpretation of Article 63A of the Constitution. Right. Sir, so when we start our discussion on Article 63A, we know that it was introduced in the Constitution by the 18th Amendment. So what was, for the sake of understanding it better, what was the background, both the legal and constitutional background and the political background which eventually led to this insertion, and what is the legal importance of this particular provision? ये बड़ा अच्छा आपने ये बात पूछी है. Background बड़ा simple था. This came in 2010 by virtue of the 18th Amendment of the Constitution, the famous 18th Amendment, which did a lot of things, amongst others, introduced this. हमारे यहाँ पर time and again, अगर हमारी constitutional आप history देखें, तो that's a history which is filled with defections. आपने कोई भी हुकूमत गिरानी है, तो चंद एक पार्लियामेंटेरियंस को अगर खरीद लिया जाए तो फ्रॉम वन साइड टू अनदर, और अगर गवर्नमेंट हुकूमत वक्त थोड़ी सी मकबूलियत उनकी कम है तो चंद एक पार्लियामेंटेरियंस को खरीद लिया जाए और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस के अंदर उनको पार्टी लाइंस के अगेंस्ट वोट करा दिया जाए. विद द एडवेंट ऑफ आर्टिकल 63A, व्हाट इट हैज ट्राइड टू डू, well, not so successfully as it seems, what they've tried to do is bring in legislation to this effect कि कोई डिफेक्ट ना कर सके. अब अगर आप आर्टिकल 63A देखें तो इसके अंदर इट सीम्स के डिफेक्शन की तो इजाजत है. डिफेक्शन की इजाजत इस सेंस में है कि आप जाकर वोट तो दे सकते हैं जिसको चाहे, आपकी मर्जी है. बट जो अभी डिबेट हो रही है वो डिबेट ये नहीं हो रही कि आपको वोट देने से रोका जाएगा. डिबेट ये हो रही है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. So one angle of argument is कि जी सिर्फ consequence ये है कि वो मेंबर डी बार हो जाएगा सिर्फ एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट के टेन्योर की हद तक, और नेक्स्ट जो इलेक्शन होंगे उसके अंदर वो आ सकता है. जो पीटीआई और अदर पार्टीज जिनके खिलाफ ये डिफेक्शन हुई है वो ये इंटरप्रिटेशन क्लेम कर रहे हैं कि दिस हैज टू बी ए लाइफ टाइम डिटरेंट, बिकॉज अगर लाइफ टाइम बैन ना किया आपने तो ये प्रोबेबली डिटरेंट बहुत वीक होगा, हेंस डिफेक्शन रुकेगी नहीं. अब इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इसमें ये है
जिस तरह के हमारे बहुत से कवानीन हैं वो इतने वेल ड्राफ्टेड नहीं है. सो वन हैज टू कंसीड कि जो इतना डिस्प्यूट और इतनी डिबेट चल रही है उसकी वन ऑफ द रीजंस ये है कि उस वक्त के पार्लियामेंटेरियंस ने शायद प्रॉपरली इन्विजन नहीं किया था कि आगे क्या क्या हो सकता है, एंड नाउ देव लेफ्ट अ लॉट ऑफ गैप्स इन द लॉ. अब जिस तरह बाकी बहुत से कवानीन में जब गैप्स रह जाते हैं तो उसको फिल इन तो सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन से या सुपीरियर कोर्ट्स की इंटरप्रिटेशन से किया जाता है. सो इन दिस केस भी अब ये जो गैप्स रह गए हैं, फॉर एग्जांपल इट्स अ ह्यूज गैप कि डिफेक्शन होगी तो उसकी सजा क्या है. now it the article 63A is absolutely silent on it. So now that the ball is now in the Supreme Court to decide, because it is going to have a huge ramification. रीजन बीइंग कि अगर आप पंजाब असेंबली देखेंगे तो चले फेडरल गवर्नमेंट के अंदर तो शायद पीटीआई के किसी मेंबर ने वोट नहीं दिया एंड दे वर स्टिल एबल टू गेट 174 सीट्स. बट अगर आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो वोटिंग हुई है हमजा शहबाज साहब की फेवर में, उसके अंदर 22 वोट, अराउंड 22 वोट्स थे जो पीटीआई के वोटर्स थे. So if now the PTI is claiming very fiercely कि these were our voters, तो इनको वोट तो दे दिया उन्होंने. सीएम भी जिस चॉइस अपने कॉन्शियंस से जिसको चाहा बना दिया, बट इसका इफेक्ट क्या होना चाहिए? So this is what is going on in the Supreme Court right now. It's an interesting debate. Right, sir. So you've reflected on the essence of the presidential reference and the content of it as well. But just a little more elaboration on the actual wording of Article 63A and where exactly is it silent? Is it silent के आगे क्या होगा अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बार किया जा रहा है फॉर वोटिंग करने में, तो क्या वो उसकी लाइफ टाइम होगा? इसका सिर्फ यही इशू है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, और आर देयर मल्टीपल अदर various facets of this Article 63A before the Supreme Court? So primarily अगर आप आर्टिकल 63A को समझें तो आर्टिकल 63A कहता है डिफेक्शन को, वो डिफाइन करता है कि व्हाट इज अ डिफेक्शन. टू प्राइमरी कंसिडरेशंस हैं डिफेक्शन के कि कोई भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के एक और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है, सो दैट पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड. सो अभी वोटिंग की नहीं है. ओनली इफ यू लीव द पॉलिटिकल पार्टी विद whom that you won an election from, you leave that party and you join another party. नाउ द इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इसके अंदर भी एक जो अब इबहाम की बात है, ये इंटरप्रिटेशन की बात है. व्हेन डू यू से आई हैव लेफ्ट ए पार्टी एंड हैव जॉइंड अनदर पार्टी? If you openly come on a television and bash your existing party and say I've joined another party, is that enough? Do you need to go to the election commission and file in some forms and say I've joined another party? Or can you also say you've left by your conduct? So to my understanding, probably Article 63A does not really explain what does joining or leaving a party means. So when you openly vote against your party, do you think that's leaving your party? So that is one aspect of Article 63A, that you leave a party and you join another party. दूसरा जिसके ऊपर ज्यादा अब डिबेट हो रही है वो ये है कि नॉर्मली पार्लियामेंटेरियंस अपने कॉन्शियंस के अपने अपने हिसाब से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखते हुए they can even vote against their own party. But तीन ऐसे circumstances हैं, आर्टिकल 63A बी बताता है, A1B बताता है, तीन ऐसे circumstances हैं जहां पे आप पार्टी लाइंस के खिलाफ वोट नहीं दे सकते, अदरवाइज डिफेक्शन का क्लॉज अप्लाई हो जाएगा. Number one is the election of the Prime Minister and the Chief Ministers. Number two is a vote of confidence or a vote of no confidence. And number three is when you are when you are voting on a money bill. तो जो नाजरीन जिनको थोड़ा सा नहीं पता what's a money bill in itself is defined in our constitution, which is a bill which relates to finances. So जब बजट बनता है या फाइनेंशियल बिल्स आते हैं या टैक्सेस आते हैं, तो वो जो स्पेसिफिक बिल्स हैं दोज आर डिफाइंड एज मनी बिल्स, जिनके अंदर आपको सेनेट से अप्रूवल लेने की भी जरूरत नहीं होती. यू कैन ओनली गेट इट अप्रूव्ड फ्रॉम द नेशनल असेंबली एंड देन सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज फाइनल असेंट. सो तीन ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहां पर आपने डिफेक्शन क्लॉज आप पर अप्लाई होगा. यू कैन नॉट वोट एज पर योर कॉन्शियंस से इज द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ वन डिबेट इज कि जी वोट तो हम करेंगे तो फिर डिफेक्शन हमारे पे लगेगी.
एक इंटरप्रिटेशन ये है कि नहीं, आपको वोट करने ही नहीं देना चाहिए जी, क्योंकि ये डिफेक्शन आप पे लग जाएगी, दिस इज अ ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो डे वन से ही आपको वोट करने की इजाजत नहीं है। बट दूसरी इंटरप्रिटेशन ये कहती है कि नहीं, आपको वोट करने की इजाजत है, लेकिन उसके बाद आपके ऊपर ये लॉ अप्लाई हो जाएगा। अब सवाल उतना ही है कि एक ब्लेटेंट वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो क्या सजा छोटी होनी चाहिए या सजा सख्त होनी चाहिए जिसका प्रॉपर डिटरेंट हो? Right. Thank you so much, sir, for that very elaborate account. Moving on, हम ये भी देखते हैं कि एक पार्लियामेंटेरियन को इन तीन सिचुएशंस के अंदर, लाइक यू लिस्टेड, अपने कॉन्शियंस के ऊपर वोट करने से रोका जा रहा है। सो क्या इसकी मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर डू वी नीड दिस? इज इट अप्रोप्रिएट लीगली अगेन स्पीकिंग कि इस तरह किसी को रिस्ट्रिक्ट किया जाए? Well, till the time that is there in the constitution, so that's the law of the land. This law of the land can only be changed by an amendment in the constitution by a two-third of the parliament. So for now, I would say that since the law is there and it should be there, और आपने हर लॉ को उसकी अपनी बैकग्राउंड में देखना है कि जिस तरह हमने अर्लियर बात की कि लॉ आया क्यों था। पाकिस्तान के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग इज एन ओल्ड फिनोमेना। ये टर्म हॉर्स ट्रेडिंग डेवलप ही इस कॉन्टेक्स्ट में हुई थी कि जी जो विनिंग हॉर्सेस हैं आप उन पे बेट करते हैं, उनको खरीद के अपनी पार्टी में ले आते हैं। और एक इसका एक और एंगल से अगर आप इसको देखें तो फिर वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसने एक पार्टी को वोट दिया था, क्या आप ये भी कह सकते हैं मॉडर्न डेमोक्रेसीज का एक और भी कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि यू वोट ऑन पार्टी लाइंस एंड व्हेन यू कम इन द पार्लियामेंट एंड यू विन अ सीट, that's actually a trust of the party, you're a trustee of the larger political party, और आप आजाद उम्मीदवार जीत के नहीं आए। So probably in my constituency if I voted for party A, और वो पार्टी ए का बंदा मैंने शायद उसको वोट दिया पार्टी लाइंस के ऊपर, अब वो डिफेक्ट करके दूसरी पार्टी में चला गया है, तो इन ऑल ऑनेस्टी एथिकली तो फिर उसको रिजाइन करना चाहिए एंड ही शुड गेट अ फ्रेश वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम द इलेक्टोरेट एंड द कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड देन कम बैक। सो दैट इज नॉट हैपेंड। So the rumors are right ke ji, most of these parliamentarians they've sold themselves out. Some are swearing upon Quran ke we've not. But apparently इस पे एक conclusive judgment by the Supreme Court बड़ी जरूरी है। In this context, it's probably now in most respects it's now a case of a first impression. For example, इसके ऊपर पहले कोई settled law मौजूद नहीं है कि सजा क्या होनी चाहिए। डिफरेंट पुरानी जजमेंट से हम इंटरप्रेट करते हैं कि जब पार्लियामेंटेरियंस आर्टिकल्स अदर आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करते हैं, देयर आर केसेस इन विच उन पे लाइफ टाइम बैन हुआ हुआ है, बट देयर आर केसेस जिसके अंदर उन पे सिर्फ एक टर्म का बैन हुआ हुआ है। सो इवन देयर हमारे जो पास्ट प्रेसिडेंट्स हैं ऑन दिस इशू उसमें भी कंसिस्टेंसी नहीं है, हेंस दिस कंफ्यूजन राइट नाउ। Absolutely right, sir. So, when we look at this particular law, हम देखते हैं कि वेस्ट के अंदर हमें शायद इतने instances नहीं मिलते. Again, context, social context is very important when we have a similar law in India. How is our particular law different from that of India, yeah, is it pretty much the same? well, इंडिया के अंदर भी ये वाला क्लॉज तो इंडिया में फर्क है, बट आई हैव नॉट लुक्ड इनटू विद द स्पेसिफिक्स ऑफ इट के एग्जैक्ट उनके डिफेक्शन के ऊपर इंडिया में वो क्या करते हैं। बट एज फार एज आवर लॉ इज कंसर्न्ड, इट्स साइलेंट, इट्स वेग, इट्स अनसर्टेन। 2010 में पार्लियामेंट जब ये लॉ ला रही थी, इट कुड हैव डन इटसेल्फ, अगर ये इसको बेहतर कर देती, इसको क्लैरिफाई कर देती, कंफ्यूजन ना लाते। अगर आप इतनी एक कंफ्यूजन लाएंगे जिस तरह के हमारे लॉज में, और आप जिस तरह आप बहुत सी और जगहों पे कंफ्यूजन फेस कर रहे हैं कि व्हाट इफ द गवर्नर रिफ्यूजेस टू टेक एन ओथ फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर, व्हाट इफ द प्रेसिडेंट रिफ्यूजेस द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, व्हाट शुड हैव बीन डन। सो बहुत से मामलात के अंदर हमारी पार्लियामेंट जो है उसने काम ठीक नहीं किया। अगर वो कवानीन पार्लियामेंट जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो यही है कि लेजिस्लेचर हैज टू लेजिस्लेट। अब हर काम के अंदर अगर आप जुडिशरी को डालेंगे और इंटरप्रिटेशन के डालेंगे तो फिर बाद में फिर और ऑप्शन ही कोई नहीं रह जाती। लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि अदालतें क्यों मदाखलत कर रही हैं। अदालतें इसलिए मदाखलत कर रही हैं क्योंकि पार्लियामेंटेरियंस ने अपना काम ही ठीक नहीं किया।
Had they done their own job, this would have never come to the courts and would have been sorted at the floor of the parliament. Sorry, sir, I just dropped out, but I'm sure you've answered that question. If you have anything to add, you may do so. No, that's fine. I think that was it. Perfect. So, sir, when you're talking that this particular law is vague, and now we're waiting for a clear pronouncement from the Supreme Court that will settle the particular confusions in this area, do you think that such an important clarification or such an important correction, so to say, in the law should come from the Parliament? There should be some constitutional reform in this area. Is there room for constitutional reform? Well, ideally, yes. Not only there is room for constitutional reform, there is a huge room for massive legal reforms, which should only come from the parliament. लेकिन पार्लियामेंट में अगर आपने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लानी है विच दिस लॉ, अगर इसमें कोई इंप्रूवमेंट लानी है, कोई ऐड करना है 63A में, तो दैट कैन ओनली कम फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट which requires a two-third majority by the parliament, which in the current situation is impossible. So I doubt कि for in the short run कोई parliament इसके अंदर reform ला सकती है. parliament के लिए तो अपना prime minister elect करना मुश्किल हुआ है unless court ना कह दे. तो daggers are drawn. इस वजह से जब इतनी लड़ाई हो और इतना अनरेस्ट हो, तो रूल ऑफ लॉ का मामला ये है कि लॉज सर्टेन होने चाहिए. जब लॉज वेग होंगे तो एवरी पार्टी, एवरी पर्सन विल ट्राई टू इंटरप्रेट इट द वे दे सी द लॉ टू बी. सो वी वेर ऑल होपिंग कि सुप्रीम कोर्ट से कोई क्लियर इसके ऊपर वर्डिक्ट आ जाएगा, जिसके बाद we'll all, as in terms of Article 189 of the Constitution, then we're all bound by what the Supreme Court has said, and everybody has to follow it, one way or the other. Right, sir. The final aspect of this particular 63A debate that is going on these days is that there have been certain delays, and there's a lot of speculation that maybe the Supreme Court is delaying it to avoid public pressure in a sense, because there's a particular political party, there's a mass support for that party as well at the moment. And are these things taken into account by the Supreme Court, and is this the reason for the delay? Well, सुप्रीम कोर्ट का तो जी बड़ा सिंपल सा रूल है, वो ये है, let the heavens fall but justice has to be done. In this context, जो हमारे chief justice हैं, I've appeared before him since he was here in the Lahore High Court for a number of years now. He's one of the most upright chief justices that we have had in a very long time. So I doubt somebody who has no skeletons in his closet will bow down to any public pressure. The little that I know my chief justice is that he will decide whatever is right, and बड़ा जबरदस्त bench बना हुआ है. एक बात ये होती है, as lawyers, what we need to see is we debate, we fight, but at the end of the day, once the court has to decide something, then we all have to bow before that judgment. They are the final authority as per our constitution, as per our legal system. ये बात आपकी ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था, इसी वजह से थोड़ी सी क्रिटिसिज्म आ रहा है कि जहां पर बकाया उन्होंने डिसीजंस किए और बड़े जबरदस्त डिसीजंस किए इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 69 कि कब वो स्पीकर की रूलिंग में इंटरफेयर कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते, उसके साथ अगर ये भी डिसाइड कर देते तो इट वुड हैव बीन ए होलिस्टिक व्यू लिया जा सकता और जो इस वक्त टर्मोइल है मुल्क के अंदर वो रिजॉल्व हो जाता. So we're all expecting, I believe, day-to-day hearings चल रही हैं अब उसके ऊपर. So I believe कि इसको जल्दी limited time दे देना चाहिए lawyers को और इसको conclude कर देना चाहिए. Because एक बात तो अब सिर्फ एक छोटी सी है, बात सिर्फ इसमें इतनी रह गई है कि उन parliamentarians का क्या बनेगा जिन्होंने डिफेक्ट किया है. Will that be a lifetime ban or will that be a minor penalty? इसके अंदर अगर तो लाइफ टाइम बैन या सख्त सजा नहीं दी जाती, सो एक इंटरप्रिटेशन आती है, वो ये आती है कि देन दैट विल इनकरेज डिफेक्शन, देन द लॉजिक ऑफ आर्टिकल 63A विल बी लॉस्ट. However, on the other hand, the parties which are beneficiary of this defection are fiercely arguing कि no, defect, if somebody किसी की जमीर की आवाज अगर जाग उठी है तो उसको आप इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते उसके लिए. So if his conscience has spoken out, existing prime minister से खुश नहीं था, policy से खुश नहीं था, so rather than giving him some sort of an appreciation for speaking out his conscience, you can just
put him in the gallows and say कि जी आप lifetime ban है. और बात वहां पर ही आती है कि lifetime ban का word आर्टिकल 63A में तो लिखा नहीं हुआ. सो एक टर्म हम यूज करते हैं और बहुत से और कवानीन में भी सुप्रीम कोर्ट ने डेवलप किया, उसको कहते हैं रीडिंग इन. सो रीडिंग डाउन एंड रीडिंग इन के दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने डेवलप किए हैं बहुत से अदर केसेस में कवानीन के लिए भी. सो इस टाइम में भी अगर आपने लाइफ टाइम बैन करना है तो देयर हैज टू बी दे हैव टू अडॉप्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ रीडिंग इन. एंड प्रिंसिपल्स ऑफ रीडिंग इन जो सुप्रीम कोर्ट ने डेवलप किए वो ये है कि वो जजेस एज्यूम करेंगे कि जब ये पार्लियामेंट 63A का ये अमेंडमेंट ला रही थी, दैट्स व्हाट दे वांटेड टू ऐड एक्चुअली, बट इट्स जस्ट देयर बीन एन ओवरसाइट और ये नहीं आया. और ये कानून का प्रॉपर मतलब ही तब तक नहीं निकलेगा जब तक ये लाइफ टाइम बैन नहीं आएगा. So that's something which will be very difficult, but let's see what the Supreme Court decides. Right, sir. So we have a question from the audience as well, and one of our members is asking that what will happen to the people who voted against their party line in Punjab. So Barrister Haris Azmat has dropped out. I think this was, if we are unable to have him again, we will just conclude the session, but this is a very pertinent question raised, and we'll wait for around 10 seconds for Barrister Haris to join. I'm sorry, I just logged out. If you can just repeat the question. No worries, sir. So we have a question from one of our members, and they're asking that what will be the situation against those members who have voted in favor of another party and against their own party line, particularly in Punjab in the election of the CM. So could something be done? Can this defection clause be applied to them? Well, that's an interesting question. As we've discussed, their fate hangs in the balance right now. Their ball is in the court of the Supreme Court. We might just see a verdict coming from the Supreme Court that they are banned for life. We might just see that they are just banned for 5 years, 10 years. Maybe they're not banned at all. So right now they're in a pickle. Not only will this have repercussions for the Punjab Assembly, where 23 people have voted, this might have repercussions for the National Assembly too, because right now the majority is of only 2 members. 172 bane the, and few jo coalition members, and they're not happy. So what if the president of Pakistan right now requests the prime minister to take a fresh vote of confidence? और 3 बंदे इधर हो जाए तो then even the prime minister will have to take the help of the defecting members, जो 15 या 20 इस वक्त PTI के नून लीग के साथ हैं. तो hence they will also be looking at this judgment with a very critical view of what's going to happen. So right now it's anybody's guess. If you take my view would be that the law has to be a little more stringent. Because if a defection clause has been specifically incorporated in the Constitution, it should be given its literal meaning, and the law must not be made redundant. Because if a strict punishment is not given, then to my understanding, then the law becomes redundant for now. Right. So you just reflected on a very interesting point. The president can ask the prime minister to take a fresh vote of confidence, although that's not strictly related to Article 63 of the Constitution, but I'm sure this will be very interesting for our audience as well. So if you could please elaborate a bit on that. Yeah, the president of Pakistan has the powers under the Constitution when the president feels that the prime minister has lost the confidence. The president has the power to ask the prime minister to seek a vote of fresh vote of confidence from the elected members. So आज तो 172 है with the prime minister, but if 10 दिन बाद 172 नहीं रहते तो because the president is from the other side and the politics are in play. So that's something that the prime minister or the incumbent government has to keep a close eye on. Okay, how many people are still with us? And it's very difficult in such a scrambled coalition to keep everybody happy.
Right. Thank you so much, sir, for your time. It was a very intellectually beneficial session, and I'm sure for all our audience, it would have been an eye-opener. There were various facets of Article 63A that you reflected upon. With that, we move towards the end of this session. I would also like to thank our audience, and I hope you found this session very helpful for you. Thank you. Thank you very much. Hums वो वाला वो